हेलो बच्चों, आज हमें डिस्कस करेंगे बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन बोले तो क्या है? बीटी मीन्स ये एक बैक्टीरिया का नाम है। वो क्या है कि बैसिलस thuringiensis। ये बैसिलस thuringiensis के अंदर एक टॉक्सिक प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। Inside the Bacillus thuringiensis, one toxic protein is synthesized. This toxic protein will kill insects which infect the plants, like tobacco budworm, which will affect the tobacco plants, and armyworm which will affect the plants. इसके बिना आर्मी वर्म, टोबैको बडवर्म के बिना ये बीटल्स को भी किल सकते। इट विल किल बीटल्स विच बिलोंग टू सीलोप्टेरॉन्स, और ए डिप्टेरॉन्स, फ्लाइज एंड मस्किटोस also it will kill. Whatever the protein synthesized inside the Bacillus thuringiensis bacteria, it will kill the insects which will affect the plants. And these proteins are synthesized in the form of a crystal during their growth. A proteins crystal form में synthesize होता है during their phase of growth. And these proteins are toxic. The proteins are toxic. As they are toxic, they will kill the insects. As they are toxic, they will kill the insects. Okay. A toxic protein insect के अंदर रहता, लेकिन insect को कुछ भी नहीं होता. It will not affect the insect. What is the reason? It is ये टॉक्सिक प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। वो इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलता है कि प्रोटॉक्सिन। वो इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलता है कि प्रोटॉक्सिन। ये इंसेक्ट के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता, उसको क्या बोलता है कि प्रोटॉक्सिन। वो इंसेक्ट्स अंदर लेने के बाद क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है। इंसेक्ट्स अंदर लेने के बाद ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है। क्यों एक्टिवेट होता है कि ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच इन द गट ऑफ इंटेस्टाइन, दे गेट एक्टिवेटेड, and after they get activated, when they get activated, these toxic proteins, they become soluble. These soluble toxic proteins, they bind to epithelial cells of the gut of insects. They bind to epithelial cells of gut of insects. As they bind to epithelial cells of gut of insects, it will cause, that is, it will cause the pores, the breakdown of the gut. Minute pores are formed. It leads to swelling. Swelling के और lysis भी होता है. Eventually, it leads to death of the insect. It leads to death of the insect. ये Bacillus thuringiensis से टॉक्सिक प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाला जीन्स ये बैक्टीरिया के अंदर रहता, वो बैक्टीरिया के अंदर रहता।
So A toxic proteins are coded by a gene, that is the gene name is C or Y. The gene name is C or Y. ऐसा इसमें बहुत सारे जीन्स है, जैसे कि cry1AC, so cry1AC और cry2AB, which will code for a cry1AC or cry2AB, which will code for cotton bollworm, which will code for cotton bollworm. Okay. और cry1AB, which will code for corn borer. That means it will kill the insects of the corn borer, which will infect the corn plants. ऐसा A Bt cotton का gene, that is A genes, in the process of biotechnology, they are inserted into cotton. That's why the name Bt cotton has come. Thank you.